Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 3rd. Let's start chapter number 17 in SST. The name of the chapter is Means of Communication. Communication when we gather each other, yeah, when we want to talk someone to something. What is communication? एक दूसरे के संपर्क में हम लोग कैसे आते हैं? In this chapter we are going to read types of communication, what is communication, about different means of communication, and how are artificial satellite useful. Okay, these all come in the uh, in this chapter. First of all, we are going to read what is communication. Communication आखिर है क्या? ठीक है. शेयरिंग और एक्सचेंजिंग मैसेजेस, कोई भी मैसेज को शेयर करना और एक्सचेंज करने को हम लोग exchanging message, information or idea with one another is called communication. Communication हम लोग किसको कहते हैं? गुड मॉर्निंग, बीच में नहीं बोला करो बेटा, क्लास चल रही हो तो. व्हाट इज कम्युनिकेशन? शेयरिंग, एक्सचेंजिंग मैसेजेस, मैसेजेस को शेयर करना, एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन और आइडिया को एक दूसरे तक पहुंचाने को ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल टू नो पीपल अराउंड अस. कम्युनिकेशन से हम लोग को अपने आसपास के लोगों के बारे में पता चलता है. कम्युनिकेशन देखो, they communicate with the help of the telephone. Early people used to communicate with the help of gestures, sign and signals such as smoke. किस किस चीज से? साइन से, सिग्नल से और स्मोक वगैरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. दे इवन शेयर देयर फीलिंग, अपनी फीलिंग को कैसे शेयर करेंगे? एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे? थ्रू पेंटिंग. पेंटिंग के थ्रू अपनी फीलिंग शेयर करते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे. एंड ड्राइंग, ड्राइंग के थ्रू भी. कहाँ पे करते थे? ऑन द वॉल ऑफ द केव्स, केव्स की वॉल पर वो लोग करते थे. विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, जब लैंग्वेज डेवलप्ड हो गई, पीपल स्टार्टिंग राइटिंग लेटर्स. पीपल ने क्या स्टार्ट कर दिया? लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया टू द डिस्टेंस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. जो उनके फ्रेंड्स कुछ डिस्टेंस में रहते थे और कुछ क्या कहते हैं, उनसे डिस्टेंस में रहते थे, और जो रिलेटिव्स थे वो भी उनसे डिस्टेंस में रहते थे. ठीक है. अर्ली पिजन वर यूज टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स. पिजन्स आर द एनिमल्स एज अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन की तरह वर्क करते थे. दे वर यूज टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स, वो लोग लेटर्स को भेजने और रिसीव करने के काम आते थे. देन मैसेजेस वर कैरीड बाय मैसेंजर, उसके बाद मैसेजेस को क्या करने लगा? मैसेंजर उनको लेने जाने लगे. ऑन फुट, कई लोग पैदल, और हॉर्स बैक, और घोड़े के पीठ पर जाने लगे. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं. नंबर 1 पर्सनल एंड नंबर 2 मास कम्युनिकेशन. सबसे पहले पर्सनल. पर्सनल एज द नेम ऑफ द पर्सनल, की मतलब हम पर्सनली किसी से कम्युनिकेट करें, वो सब किस में आ जाता है? पर्सनल कम्युनिकेशन में. पर्सनल कम्युनिकेशन. टुडे वी हैव फास्ट एंड इजी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल से आप समझ गए हैं, आपस में ही कुछ लोग से बात करना. ठीक है. तो अब क्या हो गया? ये बहुत फास्ट हो गया है और इजी हो गया है. सच एज अ पोस्ट, आप पोस्ट के थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो. टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और ईमेल्स, इन सब के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन. पोस्ट से आप सिर्फ अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को, टेलीफोन के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप उनको मैसेज भेज सकते हो, स्मार्टफोन के थ्रू आप वीडियो कॉलिंग पर्सनली कर सकते हो, ईमेल्स के थ्रू आप मेल कर सकते हो. ठीक है.
पोस्टल सर्विसेज कौन सी हैं? वी यूज पोस्टल सर्विसेज फॉर सेंडिंग लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स। पोस्टल सर्विसेज हेल्प अस फॉर सेंडिंग लेटर्स भेजने के लिए, पार्सल्स भेजने के लिए एंड मनी ऑर्डर्स भेजने के लिए पोस्टल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। पोस्टल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अस विद द पोस्ट कार्ड। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है? पोस्ट कार्ड, inland letters, envelopes and stamps which help us in communicating with अदर्स। इनकी हेल्प से हम लोग दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नंबर 2, फोन्स। दीज ऑल आर कम इन द पर्सनल कम्युनिकेशन। ये सब आपके किस में आता है? पर्सनल कम्युनिकेशन। फोन इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फोन क्या है? आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। यू कैन इजिली अप्रोच इट। वी कैन मेक फोन कॉल्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग अ टेलीफोन। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई हो, आप उससे बात कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलीफोन। दीज डे मोबाइल फोन्स आर वेरी कॉमन। मोबाइल्स आर वेरी कॉमन। दे कैन बी कैरीड एनीवेयर। उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। एज दे डू नीड वायर्स। दे डू नॉट नीड वायर्स, क्योंकि उसके लिए आपको वायर की जरूरत नहीं होती है। We can send text message through mobile phones by SMS short messaging services। आपको किसी से बात करने का भी टाइम नहीं है तो आप फटाफट मैसेज सेंड कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू बाय मोबाइल फोन्स। नाउ स्मार्टफोन्स फंक्शन लाइक अ कंप्यूटर। स्मार्टफोन का फंक्शन कैसे होता है? जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। दे आर मच फास्टर देन मोबाइल फोन। वो मोबाइल फोन से भी तेज चलते हैं। वी कैन सर्फ द इंटरनेट। उसमें हम लोग को इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। सेंड अ ईमेल, आप ईमेल सेंड कर सकते हो। वॉच मूवीज, आप मूवीज देख सकते हो। वीडियोस, न्यूज़ेस and many other things in smartphone. This is the mobile phone and this is your smartphone. All of you using by using a smartphone you can attend your zoom class। zoom class भी आप अपनी smartphone पर ही attend करते हो। Let's see what is this। The internet play an important role in communication। Internet is very necessary for today's life। It helps in communicate with each other very fast। Computer, mobile phone, laptops, tablets, e-book readers use internet। ये सब क्या करते हैं? इंटरनेट को यूज करते हैं। The devices are connected to each other all over the world through the internet। इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? We can connect with each other in the world। The internet help us to किस किस चीज में? send emails, electronic mails भेजने के काम, using a computer, कंप्यूटर में यूज करते हैं, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन। At this time you are also using internet। read books using an e-reader। e-reader से आप बुक यूज कर सकते हैं। These books can be downloaded from the internet। e-books आप किससे डाउनलोड कर सकते हैं? इंटरनेट से। Send pictures, videos, play games। किस किस चीज के लिए इंटरनेट काम आता है? पिक्चर सेंड करने के लिए, वीडियो सेंड करने के लिए एंड प्ले गेम्स खेलने के लिए। रीड न्यूज एंड वॉच प्रोग्राम्स। न्यूज रीड करने के लिए और प्रोग्राम्स के लिए। लर्न अ न्यू रेसिपी और स्किल। अपनी नई स्किल को भी आप लर्न कर सकते हैं इंटरनेट से। नाउ मास कम्युनिकेशन। दीज ऑल आर द स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, पोस्टल सर्विसेज। दीज ऑल आर personal communication। In personal communication we communicate one or two people only, but for mass communication we connected with thousand and crores people at a time। Mass communication play important role in our daily lives।
मास कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ्स में। न्यूज़पेपर, रेडियो and television help in giving information to a large number of people at once. क्या क्या चीज़ें, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इससे दी और ली जा सकती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ढेर सारे लोगों को एक साथ। It helps us to know about what happening in the country as well as the rest of the world. इनकी हेल्प से हमको पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, और we also know what is happening in the world also. Newspaper, magazines, radio and television are the example of mass communication. What are the examples of mass communication? Newspaper, magazine, radio and television. Okay, use the picture, answer the question. What is shown in the picture? It is a letter box. How is it useful? It is used for uh, putting letters in this. Okay, now radio and television. We can learn new things, watch news, movies, songs, cartoons, and other programs on the television. हम लोग क्या करते हैं? We learn new things. हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं. Watch news, movies, songs, cartoons and other programs on the television. टेलीविजन में हम लोग देखते हैं. We can listen to newspaper, song and other entertain newses. हम लोग न्यूज़ सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं और अदर एंटरटेनमेंट इन द रेडियो और टेलीविजन. Programs on the radio or and television are helpful for the people who cannot read or write. जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते हैं, they also use radio and television. Okay, newspapers and magazines. Newspaper gives us detailed information about the things happening around us or far away from us. Newspaper में क्या होता है? Gives detailed information. हम लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है किससे? अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड अस फॉर फार, और जो हमारे आसपास है और जो हमसे दूर है उसको भी पता चलता है. न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस. न्यूज़पेपर कई लैंग्वेजेस में छपता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली इज अ गुड हैबिट. अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट. मैगजीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस. मैगजीन्स भी हैं जो आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो वी आर इजी टू परचेज अकॉर्डिंग टू आर लैंग्वेज. दे कैरी न्यूज़ अदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. उसमें न्यूज़ के साथ अदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस भी होती हैं. मैगजीन्स आर पब्लिश्ड मंथली. मंथली पब्लिश्ड मिलती हैं, वंस इन अ मंथ, मंथ में एक बार आने. फोर्टनाइटी मीन्स द 15 days. फोर्टनाइटी मतलब आप 15 days में भी बनती है, वीकली एवरी वीक भी होती है, और ईयरली वंस इन अ year. Aryabhat was the first artificial satellite launched by India on 19th April 1975. Now, artificial satellite, what are the artificial satellites? Artificial satellites play a key role on the communication. It plays a key role on the communication. These are electronic device that sent into the space. इसको artificial satellite को हम लोग कहाँ भेजते हैं? स्पेस पे भेजते हैं. They collect information from one place and transmit into different parts of the world. वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन लाती है कहाँ से? एक प्लेस से, और उसको दूसरे उसमें सबमिट करती है.
Satellite enable us to view live telecast जो आप भी जिसका भी देखते हो वो सेटेलाइट के थ्रू देखते हैं ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आपके अराउंड में जो भी हो रहा है वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट से होता है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव brought us all closer। आपके आसपास रहते हैं। The world has become a smaller place and we can reach to any anyone living everyone with a few minutes में आपको वर्ल्ड की सब न्यूज़ पता चल जाती है। ओके, रिकैप ऑफ द चैप्टर। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग मैसेजेस इंफॉर्मेशन एंड आइडिया विथ वन अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग क्या? messages, information, and idea. These all are called communication. There are two types of communication. First is personal and second mass communication. Telephone, letter, mobile phone are the means of personal communication. What are the means of personal communication? Telephone, letter, mobile phone. Newspaper, radio, and television give the information large number of people at one time. So, these all are the mass communication. Artificial satellites collect information from one place and transmit it to different parts of the world। उसको different parts of the world तक पहुंचाती है। Okay, okay, choose the correct answer। where we can where can we get letter, envelopes, island, postcard at the post office? For fast delivery of message we use SMS। We can publish monthly of fortnightly magazines। There are two types of communication, personal and mass communication। Dash enable us to view live telecast। Live telecast आप किसके थ्रू देखते हैं? Of the events happening around the world by using satellite। Unscramble word. This is your homework. Complete it in your copy. Okay, these all the question answer. Okay, used in a post office. Number one, stamp. Number three, a means of mass communication, radio. Down short message receives SMS. Bird use send messages, pigeons। Now these are the question answer. Write it in your copy। इसको सब बच्चे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। Okay, children, our chapter number 17 has been finished. Now complete your work. Good day.